Hi, can you hear me? हाँ. Is that okay? I think yeah, it's fine. Yeah. कंगना, सिमरन के किरदार में जाना और हंसल मेहता की फिल्म करना, ये तीनों एस्पेक्ट्स से किस तरीके से आपने तैयारियां की, ज़रा उसके बारे में जिक्र करें. मेरे लिए एक्चुअली कई लेवल्स पे प्रिपरेशन रहा, और क्योंकि इस फिल्म का प्रोसेस बहुत ऑर्गेनिक था, तो मुझे याद है एक बार हंसल सर हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, एंड ही टोल्ड मी, बिकॉज अर्लियर सिमरन वाज अ पंजाबी गर्ल, and he said that because I am Gujarati and I have such little knowledge of that environment, so I feel that I want to portray a girl, you know, as a Gujarati, because it's a family story, and he felt that I feel that I have a lot more understanding of that culture, and I'm like, I have never been in a Gujarati family in my entire life, and I mean, apart from, you know, casually meeting my friends, I have no, like, zero understanding of their culture, their language. So I think that's when the journey started, watching few plays, and just, you know, having that little accent, not very accented, because eventually she's a girl who is NRI. From that to yes, a journey of a girl who slips in life, and like everyone, you know, somewhere she finds her ground again. So yeah, it's a story of life and magic and mistakes. हंसल सर, जब आप अच्छी फिल्में बनाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ती है हर फिल्म के साथ, तो किन बातों का ख्याल रखते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ? कोशिश हमारी यही रहती है कि जो सब्जेक्ट है, जो किरदार है, उसके प्रति हम पूरी ऑनेस्टी के साथ हम कहानी कहें, उस कैरेक्टर की जर्नी ऑनेस्टी के साथ हम लोगों तक पेश करें, और एक नैरेटिव जो है वो मेरे ऑडियंस को बांधे, वो कैरेक्टर जो है उस ऑडियंस को पूरी तरह से, कि वो किरदार लोगों का की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए. बस वही है, मतलब बहुत सिंपल फार्मूला है उसमें, कि बस लोगों तक पहुंच जाए ये कैरेक्टर. और मुझे लगता है कि सिमरन बहुत ही निराला कैरेक्टर है, कि गलतियां खूब करती है लेकिन कभी हार नहीं मानती है. शी नेवर गिव्स अप. शी इज़ एन शी डज नेवर गेट्स फटीग्ड. एंड भूषण जी, किस तरीके का संगीत होने वाला? हमने कोई एक पीस सुना था किसी पर्टिकुलर गाने का, कुछ तो जरा वो. बहुत अच्छा म्यूज़िक है. मींस म्यूज़िक फिल्म को, एक कहानी को आगे लेके जाता है. तो जो भी गाने हैं वो फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से हंसल जी ने उसको उस तरीके से म्यूज़िक को बनवाया है, और सोलफुल म्यूज़िक है. जब आप, और एक शादी का गाना भी है, मींस तो जिसमें कंगना जी बहुत अच्छा डांस कर रही हैं. थैंक यू. कंगना आपके सामने, आपसे कंगना आपके सामने, आपकी पहली फिल्म का में आपका किरदार का नाम सिमरन था, और अभी जी इस फिल्म को आप कर रही हैं. पूरा एक सर्किल होते देखती हैं, और सिमरन से सिमरन तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा है? तो आपने बहुत अच्छी बात नोटिस की. एक्चुअली जब मुझे हंसल सर ने कहा कि फिल्म का नाम सिमरन है, तो मुझे याद आया, लेकिन मैंने किसी से शेयर नहीं किया, बहुत लोगों को याद भी नहीं है. गैंगस्टर में मेरा नाम सिमरन था, और तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक नॉस्टैल्जिया तो है इस नाम से. और मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10-11 साल कंप्लीट कर लिए इंडस्ट्री में, तो एग्जैक्टली सिमरन टू सिमरन एक सफ़र है. उस टाइम पे यू नो, जो अनुराग बासु ने जो मुझे लॉन्च किया था, वो एक ट्रेजेडी थी. नाउ विद दिस फिल्म, दैट वाज अ लव स्टोरी. दिस इज़ coming of age. It's a girl and her life, and a slice of life, kind of a very light-hearted take on people who never give up. तो वैसी सी एक कहानी है. कंगना आपके सामने इधर. हंसल भाई यहाँ सामने. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पहाड़ी ब्यूटी कंगना, उनको आपने गुजराती गर्ल बनाया है, तो ग्लोबल गुजराती ऑडियंस जो है, जो यूएस से लेके जापान तक फैला है, कंगना उनको किस नए रूप में देखने को मिलेगी? मेरा मानना है कि गुजराती हो या पंजाबी हो या पहाड़ी हो, मतलब इंसान इंसान होता है. एंड आई थिंक इस कहानी और कंगना के परफॉर्मेंस की खासियत यही है कि वो हर उस लड़की को जो चाहती है एक फ्री स्पिरिटेड ज़िंदगी जीना, अपने रूल्स से ज़िंदगी को जीना, भले ही गलतियाँ करे, वो उसे आइडेंटिफाई करेगी. मेरा मानना नहीं है कि ये गुजराती एक कल्चर था जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, और क्योंकि ये अमेरिका में सेट है, अमेरिका में
मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि वहाँ एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है जो मोटेल पटेल कहते हैं वो लोग वहाँ, तो वो उस मोटेल पटेल कम्युनिटी को हमने सोचा कि फिल्म में दिखाना, एक नया कल्चर है उसको दिखाना फैसिनेटिंग होगा। मणिकर्णिका से दूसरा सवाल है मेरा कि यूएस में मैम शूट किया है आपने, तो हमारे जो मोटेल पटेल वाले हैं उनके साथ कैसा आपका वहाँ पे रैपो रहा? बहुत अच्छा रहा और एक अलग साइड मुझे देखने को मिली, क्योंकि हम लोग जो सिनेमा देखते हुए हम लोग आए हैं बॉलीवुड में, हमेशा एनआरआईज का एक इम्प्रेशन रहता है, लेकिन वो सारा हंसा सर ने ब्रेक कर दिया। एक अटलांटा में ग्रिफिन करके एक एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि वही जैसे देश वो कच्चे सूख रहे होते हैं घरों के बाहर, उस टाइप का माहौल देखने को मिलता है। एक लड़की की कहानी है जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। शी बिलोंग्स टू the so-called grass root level of the society, but her dreams are very high and she wants to belong and she thinks she deserves. So it's just an ode to that spirit. कंगना, आपके सामने रितेश ईटीवी से। अभी हंसल मेहता जी ने कहा कि आप कभी हार नहीं मानती हैं, तो इस किरदार को अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करती हैं, तो क्या ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किरदार है इस तरह का? आप पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हैं? या ऑन मैनी लेवल्स। जैसे कोई ना कोई किरदार में कुछ ना कुछ तो आपको आइडेंटिफाई करके यू हैव टू लैंड दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी टू योर कैरेक्टर। सो आई थिंक प्रफुल्ल की ये जो बात है कि वो चाहे किसी भी जगह को बिलोंग करे, लेकिन शी वॉन्ट्स टू मेक हर ओन प्लेस in that I call my life pursuit of magic, but the only difference is that I realized magic like one instance, like say one audition that I cleared in Gangster, but Praful never did. So that is the only difference probably. Otherwise I don't see any difference in the journey. She makes equal amount of effort. She has the same spirit, same ambition, but somehow like just like she never had that stroke of luck. So for me it was a nice alternate life that I could have had if not this. So it's been quite enlightening, must say. Hey Kangana हंसल जी, आपसे सवाल है कि क्या आप जब स्क्रिप्ट आई आपके पास या आप स्क्रिप्ट बना रहे थे, तो क्या कंगना ही दिमाग में थी कि इस रोल को कंगना ही करेंगी? स्क्रिप्ट से पहले कंगना ही थी। मैं मतलब 2014 से परस्यू कर रहा हूँ कंगना जी को, और मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, तो वो एक होता है, डेस्टिनी की बात होती है कि ये किरदार, ये फिल्म उस वक्त होनी थी। संजोग की बात है कि हमने फाइनली यही सिलेक्ट की स्क्रिप्ट। कंगना को ये किरदार पसंद आया, हमने यही फिल्म बनाई। तो लेकिन मैं सालों से, मैं एक्चुअली मैंने एक बार बताया भी था कंगना जी को कि बहुत साल पहले मैंने उनको ऑफिस बुलाया था एक स्क्रिप्ट के नरेशन के लिए, बहुत अर्ली डेज में। तो उन्होंने जस्ट गैंगस्टर के जस्ट बाद मैंने बुलाया था, और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से नरेशन दिया था कि ये तो हाँ ही कर देगी। बाकी कोई मुझे वैसे भी हाँ नहीं कहता था, तो बोले ये हाँ कह रही है। उन्होंने मुझे कहा कि ये तो कर ही लेगी, इसको ना इंग्लिश आती है, ये पहाड़ी है एकदम वहाँ। हाँ, मना कर दिया मेरी फिल्म को। तो ये मुझे बिल्कुल ये इंसिडेंस याद नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों के साथ मैं गई थी वहाँ पे, आई थिंक भूपी जी मैनेजर थे, तो तब मुझे लगा कि सच बोल रहे हैं। नहीं, पहले मुझे लगा कि ये झूठ कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये मुझसे, इनकी ईगो काफ़ी हर्ट हो गई थी। तो ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, चाहे मुझे याद हो चाहे नहीं, लेकिन ईगो में ज़रूर हर्ट करती हूँ। Hey Kangana ji, this is me Anurag here. Hi Second Anurag. year. I want to ask you, could you share an anecdote? ये shoot के दौरान आपको कुछ difficulty face हुई, या फिर during the shoot were there hitches that you came across, and how did you go about managing in your acting, be it on the set or be it when in United States? Well, वैसे actually I have to tell you that this has been by far the easiest film that I have shot in terms of the costumes, locations. They were very easy. Rarely you get films where you don't have physical challenges, but something very weird happened with me, which is actually not funny at all, but I was driving on an American highway with this like extraordinary speed, like how you have these 3-4 lane highways, and my driver on the wheel, he passed out. He just passed out. And of course, like we had that little moment where I thought,
should I like text my parents that, last goodbye and this and that. But then he banged into sidewalk and we were taken to hospitals and all of that. But if I want to put this in any script, that a driver can just pass off like that, and just when he banged the car, he woke up. Like, where are we? We are still alive. So that was quite funny, and I think it took me a lot of time to recover from that trauma. Like, even still, when I think of it and I tell anyone, people are like, well, that's hard to believe, but I have my witnesses. They've seen the car also, and they've seen the accident. Car flew from the final lane to the first lane. It went flying. It was going at 80 miles per hour. And I had a little bit head injury, but this is quite, surreal for anyone's driver to, pass out on the wheel like that. I wonder if there have been any calls from the aviation ministry as yet with the name of your protagonist. Anybody? Hi, Kangana. Yes. Kangana here, right in front of you. Here. Here is a great location, right there. In the middle. Okay. Yes, right. Sorry, there. yeah. So I'm Vanshika from The Quint, and first of all, congratulations for the trailer. It is just amazing. Thank you. And so I wanted to ask that how easy was it to pick up the Gujarati accent? How fun, and how did you do it? There were many degrees actually, because like I said, I've never and Hansal sir doesn't have Gujarati accent. My friends that I meet who are from Gujarat, so I could not identify it, because it's not the most obvious accent. And I have my tutor, Suraj. He will teach me, and I go to the set and Hansal, this is too much. Bring it down. And then I bring it down, and Suraj is like, you can hardly hear it. Then bring it up. So I was confused, and I couldn't take a call, because usually I would be in a place to tell that, hey, this is what I want to do. But in this case, I couldn't. So I was constantly conflicted. Even now, I asked Hansal sir, was that okay? He's like, yeah, this is fine. And he and Suraj are constantly fighting. He thinks that we don't want to make it a very, caricature-ish. And Suraj obviously chooses to differ. So I think, the representation of communities, whether it's Gujaratis, we tend to caricaturize it. Every Gujarati doesn't say, they don't talk like that. Hansal sir, आपने कंप्लीट कर लिया हो इधर आपकी राइट में. Same row on the right. Yeah. तो जैसा अभी आपने कहा कि हर गुजराती इस तरह से नहीं बात करता, बट इंडस्ट्री में जैसे भी अगर कोई फिल्म बनती है उसमें इस तरह का स्टीरियोटाइप बहुत स्टैब्लिश किया जाता है. जैसे अगर गुजराती है तो एक्सेंट आएगा, पंजाबी है तो वो लाउड होगी, वो लड़की चिल्ला के बोलेगी, से अगर बिहार से है तो वो फिर वो अंग्रेजी नहीं जानेगा. इसीलिए तो ये फिल्म कंगना जी ने की है और मैंने बनाई है. इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ सके. कंगना, इस फिल्म में आप एक्टर के अलावा आपने डायलॉग राइटिंग का भी एक रोल निभाया है. वो क्यों फैसला किया? वो किस तरीके से वो जर्नी एक आपकी जुड़ी? कुछ फिल्में जिनमें आप देयर आर फिल्म्स जो कि प्लॉट ड्रिवन होती हैं, देयर आर फिल्म्स दैट आर कैरेक्टर ड्रिवन. जब आपकी एक सिंगल कैरेक्टर की जर्नी होती है, देयर more than plots or more than lines, what matters is what is the psyche of the character. And I think in such roles, actors can, not in a very deliberate way, but in a more organic way, they can construct lines which are more character friendly, क्योंकि वो ही character में उनको निभा रहे हैं. So in that aspect, I always told Hansal sir कि I will write my own lines for these. So these are just to have a very fluid journey. मूल राइटर जो हैं मूवी के, उन्होंने आपत्ति उठाई जिस क्रेडिट को लेकर के. आप दोनों सवाल इस पर जो आप. Well, to be honest, now that we are here, all of us here, I would like to clarify one thing, that there is a lot of misconceptions about that whole thing that took place. First of all, I would like to clarify that there are no dues pending. Somehow it's made to look like that someone's not, like Apurva has not been given his due, whereas we have done exactly what he asked for. And even we fail to understand. He's the one who suggested that I take additional credit dialogue, and all the documents and contracts are signed that way. Hansal sir can tell you, or Salesh, or whoever is the part of the film. And post that, also, he and I worked on the schedule together. He came to my house and we all worked for another schedule. And after many months, he decided to write this note
just when Rangoon flopped and 2-3 people attacked me, which I thought was in a very bad taste and was very planned and extremely deliberate. But if like I always said, if there is anything that we can do in this matter, we would love to, but there's literally nothing. You know, he's the writer, he's got all the credit he wanted, and whatever we have done is keeping his consent in mind. In fact, like I said, he's the one who suggested, and that's how it is. This is where we stand today. Yeah. There's a question here. Can we hand him a mic, please? Thank you. Ulta. Thank you. नमस्कार कंगना। नमस्कार। ये माइक उल्टा हो गया था, वैसे ही जैसे आप बने बनाए नियमों को नहीं मानती हैं, ऐसा हो जाया करता है। All right. हर बार जब आप एक नया नियम बनाती हैं और पुरानी परंपराओं को ध्वस्त करती हैं, तो लोग पहले ऐसे ही हंसते हैं, जैसे इस माइक के उल्टे होने पर हंसा गया। आपको क्या लगता है इससे कितनी मुश्किल आती है, इस बगावती तेवर से, जो हम आपको देखते हैं कि आप अक्सर ईगो हर्ट करती हैं, जैसा कि आप खुद एडमिट करती हैं, और जब हम आपका नाम शाहरुख और अमिताभ बच्चन की परंपरा में अगला नाम जोड़ते हैं कि ये नई नायक हैं, तो कितने उत्साह की बात है और कितनी मुश्किल की बात है आपके लिए? मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी अलग है। मैं आज अपने घर से मनाली से जब आ रही थी तो एयरक्राफ्ट में बैठ के मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मिलना होगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो मुझे ऐसे लगा कि क्या मेरी जर्नी सच में ही इतनी अनयूजुअल है कि सिर्फ मुझे लगता है। तो उसमें एक ही आस्पेक्ट है जो उभर के बार बार आता है कि मुझे अपनी हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। हर चीज़ मुझे लड़के ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़। अब वो ऐसा ही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरी लाइफ ही ऐसी है। सो आई मेड पीस विद इट, और एक आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का एक नियम सा बन गया है। तो मुझे इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही जैसे बगावत करने वाले या रेबल या लड़ाकू या जो भी कहें, आई डोंट टेक एन ऑफेंस। अच्छा है, जैसा है वैसा है, बट जो मेरा हक है वो तो मुझे लेके ही रहना है, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले। Woo! Hashtag Bhagavati Tevar for life, Kangana. I love that hashtag. Let's make it trend. हंसल सर, एक आर्टिस्ट के तौर पर जब आप किसी का सिलेक्शन करते हैं तो नेचुरली कंटेंट ड्राइव करता है आपको उस डिसीजन के लिए, लेकिन साथ काम करते हुए जो एक संरक्षक के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पे जो चीज़ें आप अपने सह कलाकार के बारे में सोचते हैं, क्या आप कभी कंगना को एडवाइस करते हैं कि इनको टोन डाउन करना चाहिए और आप करना चाहिए? देखिए, डायरेक्टर मेंटोर नहीं होता है, वो पार्टनर होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है। कि आपके साथ इतने सारे टैलेंटेड लोग, इतने सारे आर्टिस्ट जो एक्चुअली जिनमें मुझसे ज़्यादा हुनर है, उनको मैनेज करना और उनको समेटना, उनके काम को एक दिशा में ले जाना, ये मेरा काम है। मैं मानता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है, एक सेंसिटिविटी के साथ मैनेज करना, ये एक डायरेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और मैंने अंसर सर को हमेशा कहा है कि आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, बिकॉज हमेशा डायरेक्शन को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं विद समवन हु इज़ मोर लाइक अ डिक्टेटर, समवन हु टेल्स एक्टर्स हाउ टू एक्ट, someone who tells art director how to put up his sets, someone who tells the designer what designs are like. Jabki a director is like sir said, he's a someone who is a guiding force. So मैंने कभी भी set पे monitor नहीं देखा, because it is a relationship of trust that you build with each other. And that is like I was writing my dialogues and I was acting, but he would always call me, "Do you want to see your shot?" And I just refused to, and not even once, not even one shot I've seen. So I think that's because I told him, he's like, "You never see monitor, don't you want to see how it's looking?" I told him that, sir, I've seen your films, and he has as a universal language of cinema, his cinema is very subtle, and I have different sensibilities when it comes to, sort of depicting a certain story. So I don't want to interrupt in his thought process. At the same time, never in his life he told me
enacted a scene that, you know, do this. And I think the best directors I worked with are like that. They give you the material and they let you interpret it. Kangana Hansal Thank here, you. on your extreme left. Ankur from HuffPost. Hey. I wanted to ask both of you, you know, in Bollywood, broadly speaking, there's a dearth of female narratives. You know, like a Simran or a lipstick under my burqa is more the exception than the norm. So did you at any point feel, you know, like any kind of problems in raising investment for a film that's entirely female-centric? Or helping Kangana helped because, having Kangana help because, you know, she's obviously a star and that makes the process easier? Of course, I mean, a narrative like Simran, having a star like Kangana is absolutely, you know, it helps us raise money. But at the same time, I would not ask somebody to play a character if that star could not be the actor for the character. So, I mean, it's she is a unique combination of a fantastic actor, and for me, that was the most attractive bit. And my producers here were generous enough to, you know, support that conviction. And I think female narratives, you know, there is, you know, which narrative in today's times can you say is popular? A narrative that is engrossing, a narrative, a character that is endearing, a film that makes you smile, a film that reflects a slice of life. I mean, that is the narrative that we are looking for. And it so happens that that protagonist is a female, and a female who, I mean, I think it's a character that we will all, I'm very proud of the character. It's a character that redefines many stereotypes about the female The narrative, gender itself. the female narrative itself. But what I mean is, in mainstream cinema, you usually see women in the context of men. So this is quite a refreshing change. So Well, here you see a man in the context of a woman. yes, yeah, like that. Thanks, Ankur. Could you please pass your mic 2 rows up in the front? Thanks. This is for Hansal ji. What was your experience shooting in America and working with American technicians? Honest answer? It's different. It's different. It is there's a different discipline and a different work environment. So it took a bit of time to get adjusted to that discipline, and also, you know, the previous films that I had made, I was never used to so many people on set. So it was a new environment, but very professional, and very. I mean, we made some really amazing friends by the time we left the US, and I just wish it would be a little more inexpensive. Thank you. Please pass your mic ahead. That gentleman's been waiting for a while. Thanks. Yeah, Hansal, first of all, congratulations. The trailer was really amazing. It had the, you know, class of a Hollywood movie. I mean, I almost thought I was watching an English film trailer. And coming to my question, can you share some information on the character Praful Patel, and how did you think of the name Praful Patel? You see, there is, I mean, there's a backstory to that name, that, you know, her father, Praful's father, wanted a son. So जब लड़की हुई उसका नाम प्रफुल्ल रख दिया. So it's, you know, many people said कि why is she not Prafulla? I said वो उनको प्रफुल्ल चाहिए था, उनको प्रफुल्ला नहीं चाहिए थी. So, you know, somewhere the girl has taken on that role. The girl who wants to buy a house, wants to be independent. It's the role that the boy would take over. So, Praful Patel is a universal character. She represents a universal truth, and I mean, it is played to absolutely pitch perfect, you know, perfection by Kangana. Ladies and gentlemen, this will be marking the end of our Q&A. I'm terribly sorry. That will be our last question. Excuse me. Thanks. Yes, hi. Yeah, hello, I wanted to ask this question. Okay, we take these Sorry, two hang on. questions. The girl in the back. Yeah. Who started the question? Go ahead, please. Hi, Thank Kangana, you. this is Mini from India Today. So a lot has been said about nepotism, and at IFA Awards, Karan Johar, Saif Ali Khan and Varun Dhawan mocked your statement about nepotism. So what do you have to say about that? Well, I've written an open letter on it, and I think it's just
It's been very well discussed. Yeah. But Thanks. we have read all the letters. We have heard all the comments. But you want me to explain? To sum it up, how do you see this entire havoc created in the industry, and how do you take this as? Like What I is said, your- I've said everything I had to on that matter, and like it's pretty much that. Any other Sorry, question? thank you There's so one much. question I just Yes. wanted to ask. But I've answered that. I have a question. So why why do we have repeating to? that. Yeah. Can we please stick to questions about Simran? Thank you. Thank you. Now turning director. Just after money karne ka. Okay, so that's is there something being lined up, something being Yes. planned, a Yes. script, a Yes. proper script, Yes. everything, Yes. everything. I'll in make a place. proper script on